Okay, good evening, guys. Hello, everyone. Hello. Yeah, welcome to the session. So, I hope you all are doing good. Let me know in the chat box if I'm clearly audible and visible to all of you. I hope it is fine. Yeah. Hi, Bacha. Am I clearly audible and visible to all of you? My audio and my video should be fine. Yeah. Okay, so today we are going to cover a very important chapter that is the classification of the enzymes. बच्चों को बहुत ज़्यादा difficult लगता है biomolecules का chapter because in this chapter you get to know about the biochemistry, and biochemistry you can say it's just an or advanced version of organic chemistry. सो आज हम उसी का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स वो कवर करेंगे बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू नो अबाउट द एंजाइम्स इफ यू आर गोइंग टू नो अबाउट देयर क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लासिफिकेशन की वजह से कि जो एंजाइम आप जिसके भी बारे में आप पढ़ रहे हो वो उसका फंक्शन क्या होने वाला है बिकॉज गाइस इन योर सिलेबस यू हैव टू डू द ग्लाइकोलिसिस का साइकिल यू हैव टू डू Krebs cycle, you have to do C3 cycle, C4 cycle, C2 cycle, and all the things that are there in your syllabus, all the pathways, they are supposed to be catalyzed by the enzymes only. So, इसलिए this chapter is going to be very much important to build up your concepts, and I hope you are going to have a very good time today. So, without any further delay, let's start with the topic. Yeah, so this session is going to be of like 25 minutes or 30 minutes. I'll try my best to close it as soon as possible. So without any further delay, let's start. So guys, what are enzymes? Any one of you who would like to define what are enzymes? कोई भी बच्चा है जो बताना चाहेगा कि सर enzyme ये होता है. What is an enzyme? Okay, yeah. So anyone who can tell me about what are enzymes? How can you define enzymes? When I say this term, what comes to your mind? कोई बच्चा बताएगा जल्दी से? Yeah. What are enzymes? So enzymes क्या होते हैं guys? Like the concept is very easy. Enzymes are nothing. They are just the biocatalysts. What are they? They are biocatalysts. So what is the role of a catalyst? So catalyst क्या करता है बेटा? It can accelerate or it can inhibit a given chemical reaction without being actually involved in the process. वो आपके product में appear नहीं होगा, but it can change the rate of the reaction, right? Without changing the gas free energy, without changing the equilibrium. ये आपको इक्विलिब्रियम को बहुत फास्टली अचीव करने में हेल्प कर सकता है दैट इज अ कैटलिस्ट करेक्ट सो एंजाइम्स क्या होते हैं गाइस सो दीज आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीनेशियस substances that have biological catalytic activity बेटा एंजाइम्स ऐसी प्रोटीनेशियस जनरली दे आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस जो कि बेटा क्या करते हैं जो आपके किसी भी पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं जनरली जो एंजाइम्स होते हैं बेटा दे आर मेंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन सो जो एंजाइम्स हैं वो जिस भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे उसको वो बहुत मल्टीपल टाइम्स फास्टन अप कर देंगे सो एंजाइम्स जो होते हैं एज ई मेंशन इन द डेफिनेशन दैट दे आर जनरली प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस मतलब बेटा सारे एंजाइम्स जो हैं जरूरी नहीं है कि वो प्रोटीन हो एक्सेप्शन आपके सिलेबस में एक ही है दैट इज द पेप्टिडिल ट्रांसफरेज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इज द ओनली एंजाइम दैट इज इन योर सिलेबस ओके पेप्टिडिल ट्रांसफरेज तो ये जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज है बेटा ये हमारे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है इट इज अ राइबोजाइम ये क्या है बेटा राइबोजाइम है मतलब इट इज एन आरएनए ये आरएनए है तो क्या है ये एक राइबोजाइम है बाकी जो एंजाइम्स तुम्हारे सिलेबस में दे ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर सो एंजाइम्स जो हो सकते हैं दे कैन बी we are going to learn about a little of the structure so एक enzyme बेटा या तो वो completely protein का बना हुआ हो सकता है और it can have a proteinaceous part plus a non proteinaceous part क्या है तो एंजाइम या तो बेटा प्रोटीन का बना हुआ हो सकता है या तो उसमें एक प्रोटीनेशियस पार्ट होगा और एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होगा तो वैसे एंजाइम्स which are partially made of proteins and they have a non-proteinaceous part those enzymes are called as conjugate enzymes what are they called as they are called as conjugate enzymes or they can also be called as holo enzymes they can also be called as holo enzymes so holo enzymes as I mentioned that it will have a proteinaceous part as well it will have a non-proteinaceous part so the proteinaceous part is called as apoenzyme what is it called as it is called as apoenzyme and beta the non-proteinaceous part is called as a cofactor it is called as a cofactor so please remember that
an apoenzyme is never active, or the apoenzyme cannot show its catalytic property without getting associated with a cofactor. आपका apoenzyme कभी भी बेटा बिना cofactor के काम नहीं कर सकता. ओके, सो प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर, जो कोफैक्टर है वो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर सकता है. नाउ द कोफैक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एज आई सेड, इट इज गोइंग टू बी नॉन प्रोटीनेशियस, दैट इज फॉर श्योर. अब बेटा नॉन प्रोटीनेशियस है तो क्या है? क्या ये एक स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल आयन है, ओके, या फिर ये एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है. लाइक देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर इट कैन बी एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इट कैन बी एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. सो द कोफैक्टर which is a large organic molecule and is loosely bound to the apoenzyme. जो cofactors होते हैं बेटा, जो large organic cofactors होते हैं, they are generally loosely bound to the apoenzyme. Okay, so उन तरीके के cofactors को हम coenzymes कहते हैं. क्या कहते हैं? coenzymes. तो अगर आपका एक ऐसा cofactor that is organic in nature and is weakly bounded to the apoenzyme, so that cofactor will be called as an coenzyme. And if your cofactor is an organic molecule or an atom, and it is very tightly bound to the apoenzyme, so it will be called as a prosthetic group. So it will be called as a prosthetic group. Now, any confusion till here? If you have, you guys can ask me. Okay, any confusion that you have? Okay, so generally जो coenzymes होते हैं, they are generally vitamins. फॉर एग्जाम्पल विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, विटामिन सी, और जैसे बेटा मेटल आयंस हो गए, दे आर जनरली द प्रोस्थेटिक ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक होता है, तो जिंक कार्बोक्सी पेप्टिडेज नाम की एंजाइम के लिए इट रिक्वायर्स जिंक. ओके, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, चलो, वेरी गुड. लेट्स मूव अहेड. ओके, सो वी आर गोइंग टू विद द क्लासिफिकेशन एंजाइम, दैट इज द एम ऑफ द टुडेज लेक्चर. सो बेटा सबसे स्टार्टिंग करते हैं एंजाइम्स से. हमने समझ लिया, उनका स्ट्रक्चर समझ लिया. अब बेटा थोड़े से इतिहास पे चलते हैं. सो एंजाइम्स बेटा आपका, जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि पहले हमारे पास बेटा लाइक वी हैड सम कॉमन नेम्स, राइट. फॉर एग्जांपल जैसे हम इथानॉल, आईयूपैक नेमिंग के हिसाब से वी हैव द इथानॉल, बट उसको बेटा हम इथाइल अल्कोहल की, दैट इज द कॉमन नेम और द ट्रिवियल नेम. सो सिमिलरली ऐसे ही हुआ था. जो एंजाइम्स से स्टार्टिंग में, लाइक द वी आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द एंजाइम्स. तो एंजाइम्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे. किनमें डिवाइड करते थे? दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे. तो एंजाइम्स को कैटेलाइज वाज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन वाज द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स. ओके, एंड ये क्या थे? तो बेटा दे यूज टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस क्या होता है बेटा? कि आपके किसी भी मॉलिक्यूल में वाटर को ऐड करके उस मॉलिक्यूल को तोड़ देना. जैसे बेटा फॉर एग्जांपल अगर हम जब डाइजेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द एंजाइम टाइलिन, ओके, दैट इज अ स्लाइवरी अमाइलेज. तो स्लाइवरी अमाइलेज क्या करेगा बेटा? आपके जो आप स्टार्च खा रहे हो उस स्टार्च को बेटा वो माल्टोज, आइसोमाल्टोज, अल्फा डेक्सट्रिन में तोड़ देगा. ओके, सो दैट इज हाइड्रोलिसिस. दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ अ पॉलीमर और अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस इनटू इट्स मोनोमेरिक फॉर्म. दैट इज द हाइड्रोलिसिस. तो जैसे बेटा अगर हम स्टार्च को एक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम से ट्रीट करते हैं स्पेसिफिक फॉर स्टार्च, दैट इज इफ फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू ट्रीट द स्टार्च with a carbohydrate, so it will break starch into glucose. So that is the hydrolyzing enzyme. So इसमें बेटा आपके सारे जैसे as I gave you the example, amylases, or you can also call them as hydrolases, or you can also call it as carbohydrases. Okay, then we have lipases, we have peptidases. Okay, if you have an enzyme that is breaking an S support, so that is the esterases. Okay, phosphatases, etc. These are some hydrolyzing enzymes. Then comes the other category that was of desmolizing enzymes. Desmolizing enzymes. अब बेटा desmolizing enzymes क्या है? So these are those enzymes जो बेटा क्या कर रहे हैं, जो हाइड्रोलिसिस के अलावा कोई अच्छा काम कर रहे हैं. मतलब हाइड्रोलिसिस के अलावा अगर वो कोई भी रिएक्शन को कैटेलाइज करे तो दे विल बी कॉल्ड एज desmolizing enzymes. फॉर एग्जांपल बेटा जैसे कि dehydrogenases. तो जो हमारे dehydrogenases हैं बेसिकली दे ब्रिंग आउट द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ठीक है, दे ब्रिंग आउट द ऑक्सीडो रिडक्शन. सो दैट इज द dehydrogenases. तो dehydrogenases हो गया, इट इज गोइंग टू बी एन desmolizing enzyme. एल्डोलेज जो है बेटा ग्लाइकोलिसिस में हम इस एंजाइम को पढ़ते हैं. ओके, सो एल्डो, ओके, आई हैव रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग आई बिलीव.
Just a minute. Aldolases, ठीक है, peroxidases, catalases, etc., etc. So these were the enzymes. Now बेटा, this is the old system. उसके बाद बेटा क्या हुआ? उसके बाद 1961 में एक new nomenclature was derived by IUC. That is the International Union of Biochemistry. Okay, it should be B. IUB. Sorry. ठीक है, इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. सो आईयूबी ने 1961 में एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिलीज आउट किया, जिसमें उन्होंने एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इन दिस फॉर्मेट ओनली, इन दिस सीक्वेंस ओनली, इसी सीक्वेंस में याद करना है. ठीक है, तो द ओके, यू कैन सिंपली रिमेंबर इट ऑन द वे. ऑन द हेवन लाइफ is luxurious. On the heaven, life is luxurious. So on, that is the first O, that is the oxidoreductase, dehydrogenases. The second category is of transferases. The third category is of hydrolases. The fourth category is of lyases. The fifth category is of isomerases, and the sixth category is the ligases. So these are the 6 classes जिसमें बेटा IUB ने enzymes को classify किया है. The system was proposed in 1961. So each class will have subclass. Okay, each class will have subclass. So it will have like 4 to 13 subclasses. We are not going to get into the subclasses. वो बहुत higher level पे पढ़ते हो. And हर एक enzyme को उसका एक 4-digit कोड दिया जाता है. क्या दिया जाता है? हर एक एंजाइम को उसका 4-digit कोड दिया जाता है, जिसमें बेटा इनिशियल 3 नंबर्स जो होंगे वो उसके फंक्शन को स्पेसिफाई करेंगे, एंड द 4th digit, right, the 3 initial digits will specify the function, the category, whereas the 4th digit will tell about the serial number of the enzyme. I hope it is clear till here to all of you. यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? Okay, so let's move on to the first category, that is the oxidoreductases या फिर dehydrogenases. So बेटा नाम ही में तुम्हें समझ में आ रहा है, what are they going to do? They are going to perform oxidoreduction. मतलब they are okay. इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. बेटा क्या कर सकता है एक एंजाइम? अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्म में सोचे, आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आपको पता है कि रिडक्शन का मतलब क्या है. ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि इफ आई एम राइटिंग अ रिएक्शन AH2 plus O2 and here you have O2, so it got into this thing A plus H2O. So if I have to balance this equation out, I can put 2, 2, 2, and this equation is all balanced. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है. तो इस रिएक्शन में तुम देखोगे, so बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट? This is like the compound A is oxidizing. So ये रिएक्शन बेटा ऑक्सीडेज जो है कैरी आउट करेगा. तो the enzyme is going to be an oxidase. तो जो हमारे ऑक्सीडोरिडक्टेज होते हैं, राइट, और द ऑक्सीडोरिडक्शन करने वाले बेटा, they can be classified into 3 categories. First is the oxidase. The next one can be a dehydrogenase that will further perform oxidation by removal of hydrogen, dehydrogenase. And the third category is reductase, जिसमें बेटा pure reduction होगा. Okay, I'm just writing the raw chemical equations for this and then we'll discuss about this thing. Okay, so ये oxidase हो गया. अब बेटा if I'm writing another equation that AH2, और बेटा इसमें मैंने एक enzyme लगाया that broken it out into A plus and 2 nascent hydrogens were produced. Okay, so this is dehydrogenation, removal of hydrogen. So the enzyme is going to be a dehydrogenase. So this is a reaction catalyzed by a dehydrogenase enzyme. Now the next one, that is a reductase. So again you will have A, and suppose करो बेटा उसे हम reduce कर रहे हैं. So that is the addition of hydrogen. So here the product is going to be AH2. For example, मैंने उसी का दोबारा उल्टा लिख दिया है. So this is going to be reductase. This is these sort of reactions will be performed by the reductases. ठीक है, तो एक ऑक्सीडेज का एक एग्जांपल बहुत सुंदर सा होता है बेटा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. This is an example of an oxidase enzyme. Oxidase. बेटा dehydrogenase तो बेटा तुमने बहुत सारे होंगे, जैसे सकिने dehydrogenase. I've written the wrong spelling, just a minute. Succinate dehydrogenase. एंड देन एक रिडक्टेज का एग्जांपल ले लेते हो बेटा, नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रेट रिडक्टेज. ओके, सो ये तुम्हारे कुछ
oxidoreductases, or you can simply say dehydrogenases के example है. I hope it is clear to all of you. Now transferases क्या होते हैं? So transferases, as the name is suggesting itself, कि they will transfer the groups from one substrate to the next substrate being involved in the chemical reaction. For example, बेटा जैसे यहाँ पे है hexokinase. So this is the first step. This is the first step of glycolysis, जिसमें hexokinase in the presence of magnesium ion work करता है. बेटा ये क्या करता है? तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना बेटा, ATP, that is adenosine triphosphate. So you have a triphosphate compound और यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज है. तो आपने ATP में, can I write this thing as this thing? ADP plus inorganic phosphate, right? I can write ATP in this format. ADP bond phosphate. बेटा अब ये phosphate को मैं यहां से रिमूव कर दूं, ट्रांसफर कर दूं इस कंपाउंड पे, right? The next substrate. So बेटा ये क्या हो गया? So it got converted into, from glucose it got converted into glucose 6 phosphate, और बेटा आपका ADP अलग हो गया, and nitrosamines got produced. Okay, so this is an example of a transferase. ये एक transferase का हो गया. तो hexokinase क्या है? Hexokinase is basically a transferase enzyme. Clear है? Now another example of this can be glutamate pyruvate. Okay, I'm just trying to decode for you कि क्या हो सकता है इसका. ट्रांसअमीनेज. ओके, सो ये बेटा एक अलग एंजाइम है. ओके, दिस इज अगेन अ ट्रांसफरेज एंजाइम. तो ये क्या करेगा बेटा? ये आपका अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम ग्लूटामेट टू पायूरेट. क्या करेगा? ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम द ग्लूटामेट विच इज एन अमीनो एसिड टू एन ऑर्गेनिक एसिड दैट इज पायूरेट. पायूरेट एक कीटो एसिड होता है. ओके, सो ग्लूटामेट टू पायूरेट ये कन्वर्शन होगा. द रिएक्शन इज गोइंग टू बी इसका जो फाइनल होता है, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एन अनदर अमीनो एसिड दैट इज एलालिन. तो एलालिन बनेगा आपके इस रिएक्शन के बाद. तो फाइनली दिस इज अगेन एन एग्जांपल, बहुत सिंपल सा. ना हाइड्रोलेजेस क्या होते हैं? सो दीस आर द एंजाइम्स जो बेटा आपका क्या करेंगे, आपके एक मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे विद द एडिशन ऑफ वाटर. जैसे बेटा यहाँ पे आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है. अगर आपको पता हो जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बेटा, तो द रिएक्शन इज कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन या फिर ये एक तरीके का डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, मतलब वाटर रिमूव होगा. तो बेटा जिस भी रिएक्शन में वाटर रिमूव होता है, अगर उसमें वापस वाटर ऐड कर दोगे तो यू विल एंड अप गेटिंग योर इनिशियल सबस्ट्रेट्स. ओके, तो यहाँ पे आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड था. अब बेटा मैं अगर यहाँ पे वाटर ऐड करता हूँ तो अगेन आई विल गेट माई अमाइनो एसिड. ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, दिस वाज द सेकंड वन. इससे बेटा ये दोनों फ्री हो गए. ओके, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं? वो हाइड्रोलिसिस करते हैं किस चीज का? दे कैन एंड अप ब्रेकिंग द एस्टर बॉन्ड, दे कैन ब्रेक द ईथर बॉन्ड, दे कैन ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड, दे कैन ब्रेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दे कैन ब्रेक द पीएन बॉन्ड, दे कैन ब्रेक द सीसी बॉन्ड, C halide bond. But what is the condition? That there should be addition of water. There should be addition of water. तो वो बेटा हाइड्रोलेसिस की कैटेगरी से बिलोंग करेगा. Okay, so this is what the example. Then comes the next category, that is of lysis. Lysis क्या करते हैं? तो बेटा again ये क्या करेंगे? They will catalyze removal of groups from the substrate. वो आपके substrate से आपके पर्टिकुलर ग्रुप को रिमूव करेंगे, बट the mechanism is going to be different. The mechanism is going to be other than the hydrolysis. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देखोगे, ओके दिस इज अ लिटिल इनकम्प्लीट. तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स वाई के बीच में a bond is getting created. ओके, और बेटा क्या हो रहा है, ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमेशा there is the formation of a double bond. What is it? अब लाइसिस को कैसे पहचानोगे? पहला बेटा वहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ग्रुप्स हो रहा है फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो द एंजाइम विल बी क्लासिफाइड एज अ लाइज. इट विल बी क्लासिफाइड एज अ लाइज. तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड था कार्बन वाई के बीच में, यहाँ पे लाइक देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन वाई एंड सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. अब बेटा क्या हुआ, यहाँ पे ये एक्स वाई अलग हो गए और जो बॉन्ड था इट गॉट शिफ्टेड. So this is an example of lyase enzyme. इसका एग्जाम्पल है बेटा एल्डोलेज.
तो एल्डोलेज क्या है? इट इज अगेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज इन्वॉल्व इन द फिफ्थ रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, okay, that causes the splitting of fructose 1,6 biphosphate into DIHAP, dihydroxyacetone phosphate, and glyceraldehyde 3-phosphate. ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लाइएज. सो एल्डोलेज जो है ये एक तरीके का लाइएज है, मतलब इसमें बेटा आपका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड और मॉलिक्यूल बेटा टूट रहा है, तो इस रिएक्शन को हम स्प्लिटिंग कहते हैं इन ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, दिस इज स्प्लिटिंग. ओके, आगे चलते हैं. सो देन कम्स द आइसोमेरेसिस. नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा क्या होगा? आपका आइसोमेरिज्म होगा. क्या होगा? आइसोमेरिज्म होगा. सो बेटा आइसोमेरिज्म कई तरीके के होते हैं. इट कैन बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इट कैन बी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और इट कैन बी अ पोजिशनल आइसोमर. ओके, सो जो आइसोमर्स, अगर आपके आइसोमर्स के बीच में इंटर कन्वर्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? आइसोमर्स के बीच में इंटर कन्वर्शन हो रहा है, तो बेटा इट इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी एन आइसोमेरिज. फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे अगर आपका कीटो से आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, राइट? कीटो शुगर से एल्डो शुगर, कीटो शुगर से एल्डो शुगर. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी कैटलाइज्ड बाय एन आइसोमेरेज. जैसे बेटा ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यू हैव अ कीटो ग्रुप व्हिच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन एल्डिहाइड ग्रुप. ओके, दिस इज द होल एल्डिहाइड ग्रुप. तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से ग्लिसर एल्डिहाइड. ओके, तो दिस is an example of isomerism. This is an example of functional group isomerism. COCHO. बेटा यहाँ पे जो, अगर आपको पता हो तो कीटोन और एल्डिहाइड ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, तो यहाँ पे बेटा आपका आइसोमेरिज्म हो रहा है. अगेन देयर इज एन एग्जांपल जिसमें बेटा हमारा म्यूटेस एंजाइम काम करता है. कोई बताएगा क्या होता है? तो यू हैव 3-phosphoglycerate. Okay, the 3-phosphoglycerate gets converted into 2-phosphoglycerate. तो जो phosphorus है 2-phosphoglycerate. ओके, तो ये एंजाइम बेटा म्यूटेस करवाता है. ये रिएक्शन कौन कराता है? दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय म्यूटेस. ओके, डू आई हैव अ फ्री स्लाइड? नो, आई डोंट हैव. ओके, तो ये म्यूटेस करवाता है. दिस इज अगेन अ रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. तो 3-phosphoglycerate से 2-phosphoglycerate, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफ द पोजिशनल आइसोमर. ठीक है, आपके आपने फॉस्फोरस को जो साइड चेन है वो अपनी थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट करा दी. सो दिस इज द एग्जांपल. देन कम्स द लाइगेजेस. तो लाइगेजेस को बेटा हम सिंथेसेस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सिंथेटेसेस. सिंथेटेसेस. नाउ व्हाट डज दिस मीन? तो तुम्हें लाइगेस मतलब लाइगेशन मतलब होता है बेटा ज्वाइन करना, लिंकिंग टुगेदर. तो अगर कोई भी ऐसा एंजाइम है जो दो कंपाउंड्स को बेटा लिंक कर रहा है, क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CO बॉन्ड, CS बॉन्ड, CN बॉन्ड, PO बॉन्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट इज गोइंग टू बी अ लाइगेस एंजाइम. फॉर एग्जाम्पल पायूरेट कार्बोक्सिलेज. तो जो पायूरेट कार्बोक्सिलेज है बेटा, ये ओके, एंड लाइगेसेस विल ऑलवेज यूटिलाइज ATP. दे विल ऑलवेज यूटिलाइज ATP. ये हमेशा ATP बेटा आपको ज्वाइन करना है, दो चीजों को जोड़ना है, तो आपको एनर्जी तो लगेगी, तो वो हमेशा ATP के थ्रू करते हैं. ओके, तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में अगर तुम देखोगे तो ATP लग रहा है, एंड पायूरेट इज गेटिंग एसोसिएटेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आपको ऑक्सैलो एसिटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिल रहा है. ओके, एंड यहाँ पे बेटा इस रिएक्शन को एनर्जाइज कौन कर रहा है? ATP कर रहा है. बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू ADP plus PI, the energy released will activate the enzyme and the enzyme will do its work. So this is an example of ligation, or this for pyruvate carboxylase is a ligase enzyme. And that's it. So any doubt if you guys have, you guys can ask me. हाँ, so any doubt if you have, you guys can ask me. किसी को कुछ पूछने का है तो you guys can ask, else we can do some quizzes. We can take some quizzes. Okay, no doubts. Everything is clear. सब समझ आ गया? Very good. Okay, so this is the first question. Now, enzymes that catalyze removal of groups from the substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving double bond belongs to. तो बेटा एक ऐसा एंजाइम है that is catalyzing removal of group. There is a mechanism other than hydrolysis which is being involved, and there is formation of a double bond. So the enzyme will be a transferase, first option. The second option is lyase. The third is isomerase. The fourth option is hydrolases. So what should be the right answer to this? Is it A? Is it B? Is it C? Or is it D? What should be the right answer?
What should be the right answer, guys? I'm waiting for your responses. Is a It should be A, it should be B, it should be C, or it should be D? Very easy, I believe. So, three, two, one, and go. So the answer is B, lysis, right? So हमने इसको discuss किया था कि there will be a mechanism other than hydrolysis and there will be the formation of a double bond. हमने reaction भी देखा था बेटा, right? So the reaction was looking something like this. So after treating it with the enzyme, you will end up getting this thing. Okay, so this is the reaction which is performed by the lysis. The next one, which of the following statements is correct with reference to the enzyme? क्या है? So apoenzyme is equal to holoenzyme plus coenzyme. Option B, holoenzyme is equal to coenzyme plus cofactor. Option C, coenzyme is apoenzyme plus holoenzyme. या फिर option D, holoenzyme is equal to coenzyme plus apoenzyme plus coenzyme. What should be the right answer? What should be the right answer to this one? Is it A? Is it B? Is it C? Or is it D? Be quick, guys. Is it A? Is it B? Is it C? Or is it D? Three, two, one, and go. So the answer should be D. Holoenzyme is equal to apoenzyme plus cofactor. Now the cofactor can be a prosthetic group or it can be a coenzyme. So apoenzyme plus coenzyme fulfills a condition, hence option D should be the right one. Holoenzyme is going to be coenzyme, apoenzyme plus coenzyme. Okay, or it can also be apoenzyme plus a prosthetic group, or it can simply be called as apoenzyme plus cofactor. Now the last question, which of the following class of enzyme catalyzes the joining of CO and hydrolysis of CN bond respectively? Matlab the name of the first enzyme should perform the hydrolysis and the next one should make first enzyme should join CO, like should make the CO bond, whereas the next enzyme, the other enzyme should be performing hydrolysis of CN bond. So it can be the option 1 lysis, the next one is ligases. Option 2 ligases, lysis. Option 3 ligases and hydrolases. Option 4 lyases and hydrolases. What should be the right answer? What should be the right answer to this question? Very easy. So, yeah, be quick, guys. Tell me the right answer. What it should be. So the answer, okay, let me do the countdown. 3, 2, 1, and the answer is option 3. इसका आंसर स्लाइड नहीं है तो ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन नंबर 3. बेटा पहला ज्वाइनिंग है, सो ज्वाइनिंग इज परफॉर्म्ड बाय अ ligase. Okay, it will be performed by a ligase enzyme, and then you have the hydrolysis. So the name itself suggests hydrolysis. That means it is going to be an hydrolase. Okay, so and the answer is simply option number 3. Thank you very much. Like now, if you have any doubts, you guys can ask me. You can also mention it in the comment section. Else, now any doubt if you have? Else we'll meet in the next class with another very interesting topic. So you guys can also mention some suggestions. What should I do next? Should I take my molecular biology? Should I take genetics? Should I take the immunology ka part? Should I take microbiology ka part? So it's all up to you what you guys want me to take. And yeah, thank you very much. We'll meet in the next class next Saturday at the same time.